and the other one is the insects, and the other one is the non-insect types. Okay, so when it comes to the insect types, there are two subcategories in that. One is wasp, and the other one is mites. And when it comes to non-insect pests for honeybees, they are birds and mammals like sloth bear. So those are the non-insect types of honeybee pests. Uh, so when it comes to the insect, within the insect, as I told, wasp. So the greater wax, or it is greater wax moth is one of the serious pest of honeybee. Okay, so this wasp usually it will be grayish brown in color, and it wings. The one in the photo is actually in the larva stage. When it gets into the next stage, the wings will be around 3 centimeter. Okay, so these wasp, what it does is they enters into the hive and lays eggs. They lay eggs in the bee boxes where there will be a breakage or some cracks. They easily find a space and lay eggs. And once it lays the eggs, it gets into the larva stage and then into the adult stage. So during that time, what happens is it keeps getting inside to the comb, and it start excreting striated pellets, kind of excreta that it sends, that it gets into the combs of the honeybee. So during such process, what happens is the comb gets weakened, and also the quality of the honey also gets affected. So the exact nature of the damage to beehive is it you can uh, get in terms of it affects in the terms of the quality of the honey. So the wax moth does not attack on the bee as such. Its full development to adult requires access to the used older combs or cell cappings. So this is one of the pests which is affecting the beehives or the bee boxes, or when it comes to the domestication. The controlling measures for this greater wax moth is keeping the colony stronger. The What happens is when the colonies are stronger, the honeybees itself fight against these wasps and send them out. But when the colonies are weak, and when the dominance of moth is more than the honeybee, then it start affecting the honeycombs. So we need to do a frequent cleaning of the floor, and help in checking the this will help in checking the wax moth infestation. So for this, the cleaning and time to time checking of the bee boxes, and where the particularly in the places where there are cracks, we need to keep watching. We need to keep watch that is there any development of wasp in that particular places. So there is no chemical treatment against wax moth. So only thing is that we need to maintain a hygiene, and physical cleaning is what it is recommended. Otherwise, if it is going to an extreme situation, then we can spray a paradichlorobenzene. This is the chemical which use in controlling the moths, and this is actually the chemical application has to be done only after the removing honey from the comb, because there are chances of honey getting infestation and mixing of with this chemical will be there. So that is one major precaution that we need to be keep in mind. And the another wasp is the bee predatory wasp, or the Vespa orientalis, what we call it as, and Vespa aurea, Vespa mandarina, Vespa tropioca, Vespa bacillus. So these are the other forms of bee predatory wasps. Uh, Ma'am, can you Among put the the next slide? yeah, the slide, next slide, please.
Next one. Yeah. This one, sir? Yeah, yeah, correct. Okay, sir. So here you can make out the difference between the wasp and bee, because most of the time the appearance of the bee and wasp might be similar, and in from distance we can not able to uh, make sure that whether it is a bee or a wasp. So the these predatory wasps are these wasps affect the colonies of both Apis cerana and Apis mellifera, and it is reportedly make the colonies weaker. Okay, so these predatory wasps catch the bees from the hive entrance and inside the hives as well. It makes the colonies weaker, so it keeps buzzing around the entrance of the bee boxes itself. Whenever bees try to get enter into the box, it just affects the bee, and it feeds on the bees. So these pets are active in a hot and humid environment. So we should make sure that the boxes are kept in such a environment where it is not so much of hot and humid. And the wasp, as I told, these are someone who are waiting in the entrance of the hives to attack the bees. So we should the controlling measure for this is to have a bait trappings. So there are traps that are available which uh, need to be set up in the entrance, and using the protective screens it helps the minimizing the damage or the damage to the honey bees from these wasps, and locating the nest of the wasps by following flight passes of individual wasps back to their nests, and then destroying the nest may through be time consuming, but it is very helpful. So we in the whole process we should also if we find any nests of the wasps, it is better to damage if there are any such things near to the beehives or the boxes where we kept the labor. And it is always suggested to kill them through the insect traps. Nowadays there are traps that are available in the market where you can just use it as a bats and kill them if you find any of these wasps flying around these beehives. And the better the most economic way is uh, installing bee wasp traps, and also if it is too much of a problem, and it is better to relocate the apiary. And if we find anything that is moving around, and if it's better to kill them rather than affecting allowing it to affect the honeybees. And another it's not such a major pest or insect that affects honeybees, but yeah, still it can create a huge problem if we do not control it properly. Can we go to the next slide? Bee ants. Next. Yeah. So black ants are also not only black ants but also the red ants, which also affects the bee colonies. They are the more troublesome to the bee colonies, but stronger hive usually succeeds in keeping them at bay. As I told, compared to the predator wasps, bee ants are easy to manage by placing water surrounding the bee boxes. It can be easily controlled by attacking the bee colonies or the bee combs. So this is something that can be done. You might have seen in majority of the bee boxes they used to place a water surrounding that where the boxes are kept or the hives are there, so to make sure that the ants doesn't get inside into the boxes.
Next, after wasps and ants, it is mites that also create a serious problem for the honeybees, and the success or failure of beekeeping, especially with Apis mellifera, depends largely on mite control. The factors that There are major factors that accentuate the bee mite problems. Some of the major species of parasitic honeybee mites are present in Asia, and most being native to this Asian continent. The complete eradication is not possible because feral nests of native bees infested by parasites are reservoirs of the mite, serves as the reservoirs for the mite. So we should be very careful that by the physical appearance, once if we get to know that there is an infestation, it is better to physically keep that honeybee or damage them, and so that the further infestation does not occur. Next, yeah. So as I told before, these are some of the symptoms that we should be careful or we keep watching, so that we'll get to know that there is an infestation, and helps us to take action on that. If there are more than one parasite, female might it is the female that actually creates lot of problem, because they are the one which breeds further. So it is, if we get to know if there are any presence of such female parasite, we have to we can create a physical damage to them. So the symptoms are, you can see that their bees look very weak, and there will be something called a bald brood due to mites passing through open brood cells. The larvae may die, which is seen as a displaced and larvae attached directly to the hive cell walls. So such larvae also have a grayish spots on the heads. So the displaced and cell wall attached larvae sometimes confused with the symptoms of European foul brood, but these larvae do not lose their body segmentation or change their color so fast as we observed in this European foul brood. So the major symptom what we can see is the kind of weakness that honeybees possess in terms of flying, or there may be, you can see there are some honeybees that are died eventually and falling in the surrounding of the beehives or the bee boxes. So if you get to know that, then immediately we need to start working on the control measures. Next, chemical control for to manage the pest attacks from these mites. The chemical control is one of the most popular practice that most of the beekeepers follow. But it creates this. We need to be very particular, or we need to be very cautious. The chemical treatment may creates the risk of contamination of honey through the accumulation of these chemical residues. So it is always better whatever the honey that are left in the comb, extract it and then start the treatment process. If that is not followed, then it's better not to use that honey which has been also treated with the using these chemicals. So the commonly used mite control agents are the organic acids, ethereal oils, and then the synthetic steroids and amitraz. So these are commercially available in the market as well. It is a very rare case that the most of the beekeepers use this. They always try to manage the pest attacks or the insect attacks through the physical control measures only, rather than going to the chemical treatments, because over the period of time the chemical treatment may affect the health of the honeybees as well. So it's better to keep watch on a daily basis that if there is any crack or any gaps, are there any eggs that are laid down, uh, keep open the combs and see if there is any larva development or
if some kind of seizures or extra growth that are there in the comb. So regular watching of the combs and the hives can actually control the pest infestation or the attacks on the honeybees. Next one. So other non-insect pests are like, you know what, so birds are like common crow, drango, or green beater, and the bear. These are some of the non-insect pests for honeybees. With this we can, it is very difficult to control these, but then when compared to these wasps, mites, and ants, the damage that is being happening to the beehives or the uh, colonies, it is comparatively lesser when it comes to the non-insect pests. So some of these birds are very common to the Western Ghats, not seen in other places. Common crow is very common across all the types of the geographical area, but black drongo, green bee eater are found majorly in the deciduous and evergreen and the Western Ghats part of the uh, geographical area. So bear and all, it is it might be there in the wild, but not in the domestic places. These are something that we can actually control without any much damage. So I would like to stop at this point now. If there is anything to ask, we can go ahead with the questions. Do I need to explain in Hindi as well? हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, हिंदी में अगर स्पीच आपकी क्लास हो जाती तो समझ में आता सर हमें। ठीक है, ठीक है। मैं पहले से शुरू करता हूँ। ओके कैन सर। वी गो टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज? फर्स्ट स्लाइड प्लीज। Sir, do you have any other presentation in this session, or this नो, is the end of it? दिस इज द एंड ऑफ इट। Thank you. हेमा मालिनी मैम, आर यू देयर? Sir, Yes, she sir. Tell went me, for sir. lunch. Ma'am, can we move to the first slide? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. One minute, sir. Yeah. Next one. Next slide. So आज हम ये इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये हनी बीज को क्या क्या पेस्ट अटैक होता है, या उसके वजह से हनी बीज का
डिसीजेस और या पेस्ट अटैक और उसके कारण से हनी का प्रोडक्शन कैसे कम होता है वो, और वो सब कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहले ये दो तरीका का पेस्ट है हनी बीज के लिए। एक इंसेक्ट पेस्ट होता है वो, और नॉन इंसेक्ट पेस्ट्स बोलते हैं हम। इंसेक्ट पेस्ट्स में एक ग्रेटर वैक्स मॉथ करके एक है, और बी प्रेडेटर वास्प है, माइट्स है, ब्लैक एंड्स है। ये चार तरीका है। और नॉन इंसेक्ट पेस्ट्स में जो कीड़ा नहीं होता है, बाकी सारा नॉन इंसेक्ट पेस्ट में आता है। वो बर्ड्स होगा या बेर होगा, स्लॉथ बेर, या किसी तरह का प्राणी होता है, वो सब नॉन इंसेक्ट पेस्ट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, सो ये ग्रेटर वैक्स मॉथ जो है ना, दिस इज एक्चुअली ये बहुत बी हाइव्स को अटैक करता है। वो जिधर जिधर ब्रेकेज होता है बी बॉक्सेस में, वो जगह मिलता है उधर जाके अंडा डालता है। वो अंडा डाल के उनका वो उत्पादन ज्यादा करके वो कूम क्या बोलते हैं हम, उसके अंदर भी उनका अंडा डाल के वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, बी कॉलोनीज का वीकनिंग होके हनी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। वो कोम्स के बीच में वो अंडा डाला तो उधर उस जगह पर हनी का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि उधर जगह नहीं होता है। तो इसके वजह से हनी का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है, और हनी बीज को उधर जगह नहीं मिला तो वो कॉलोनीज वीक भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसको कंट्रोल करना कैसे, मतलब हम इट्स बेटर टू नॉट टू यूज एनी केमिकल्स। बिना केमिकल यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जिधर हमको ब्रेकेज हो गया है इधर उधर उसको अंडा डालने के लिए जगह मिलता है, ऐसा जगह पर हम ध्यान रखना है और देखना चाहिए कि कुछ है क्या उधर। अगर है तो हम फिजिकली उसको रिमूव कर सकते हैं। सो रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए, और बी बॉक्सेस को डेली मॉनिटरिंग करना चाहिए। सो ऐसा करे तो इनका कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हम ये वाला केमिकल यूज कर सकते हैं कि पैराडाइक्लोरोब्लेंजीन बोल के मार्केट में मिलता है। इनको हम फ्यूमिगेशन करके स्प्रे कर सकता है, या नहीं तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड भी यूज कर सकता है। ये भी फ्यूमिगेशन करके हम स्प्रे किया तो ये पूरा इनका वास्प का ये जो अंडा और ये लार्वा और जो उनका इंसेक्ट अडल्ट स्टेज का भी इंसेक्ट कंट्रोल कर सकता है। ये एक तरीका है। दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड, बी प्रेडेटरी वास्प करके बोलता है। दिस इज ऑल्सो, ये भी बहुत कॉमन होता है। एशियन कंट्री में बहुत कॉमन होता है, और हमारा इंडिया में भी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, तो ये प्रेडेटरी वास्प है। ये कॉलोनीज बोथ एपिस सेरेना और एपिस मेलिफेरा इन दोनों कॉलोनीज को अफेक्ट करते हैं। और ये कैसे, मतलब जो एंट्रेंस होता है ना वो बी हाइव का, वो एंट्रेंस में जब बी अंदर जाने के लिए कोशिश करता है, उस समय में बी को पकड़ के खा जाएगा या नहीं तो उसको अफेक्ट करेगा। सो इसी तरह से ये बी को अफेक्ट करता है। अगर भी मर गया तो हाँ, हनी का प्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, सो इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे कि हम ये इसका फीमेल जो होता है वो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सो फीमेल का जो अलग तरीका का कलर होता है, येलोइश होता है, वो ऐसा आइडेंटिफाई करके वो फीमेल वास्प को हम अ, हटा दिया तो इनका ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन होता है, ऐसा कंट्रोल कर सकता है।
या नहीं तो इनका जो नेस्ट होता है ना वास्प का, वो मिट्टी से बना हुआ है। वो अगर बी का सामने किधर ही हमको दिखा है तो उनको फिजिकली हम डैमेज करना है, और इसका बहुत ज़्यादा ये तकलीफ हो रहा है तो हम वो जो जगह से ही वो बी हाइव्स को हम शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट। ये तो हमको सब पता है कि ये ब्लैक हैंड से वे बहुत रेगुलर पेस्ट है बीव्स का। एंड ये है कि इनका मैनेजमेंट भी बहुत इजी है, ऐसा जो वास्प और माइट्स जैसा आसान नहीं है। या बी हाइव के सराउंडिंग्स में हम पानी एक प्लेट या ऐसा ट्रे में पानी भर के उसके ऊपर बी हाइव्स रखा तो एंट्स को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर इसका का केमिकल और स्प्रे या फिमिगेशन करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट। वास्प और एंट्स के बारे में माइट्स है। माइट्स पैरासाइटिक माइट्स जो होता है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि वास्प और एंट्स हमको फिजिकली दिखता है, वो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं। माइट्स में क्या होता है, पैरासाइटिक माइट्स में ये एक हनी बी को अफेक्ट किया तो ये दूसरा हनी बी भी उसके वजह से इन्फेक्शन होने के लिए चांसेस बहुत है। इसलिए माइट्स थोड़ा खतरनाक होता है कंपेयर टू वास्प एंड एंट्स। सो द नेक्स्ट वन। और एक और चैलेंज है कि एक एटलीस्ट हम वास्प और एंट्स को कंप्लीट रिमूव कर सकते हैं, पूरा हटा सकते हैं, बट माइट्स क्या होता है, मैं जो बोला ना, क्योंकि ये पैरासाइटिक इन नेचर होता है इसलिए हम कंप्लीटली रिमूव करना बहुत मुश्किल है। सो इसलिए हम पहले से ही इनका सिम्टम्स दिखाए तो बी का एक्टिविटीज देख के ही पता चलता है। ऐसा पूरा उसका साइज में बहुत कमज़ोर दिखता है, और एक दो नीचे गिरा के वो उड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत डिफ़िकल्टी होता है। ऐसा वाला दिखा है तो उनको इन्फेक्शन हो गया है। सो ऐसा वाला भी इसको हम फिज़िकली डैमेज करके दूर डालना है, या नहीं तो बर्न किया तो भी अच्छा होता है, क्योंकि पैरासाइटिक होता है, इट स्प्रेड नहीं होता है। सो ऐसा वाला हमको ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम उसको पूरा हटाना है। मतलब आग लगा के उनको जला सकते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड नहीं हो सकता है। सो दैट इज वन थिंग विच क्या बोलते हैं हम, बिना केमिकल यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, या नहीं तो हम नेक्स्ट केमिकल्स यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। बट केमिकल जो स्प्रे करना है वो जितना हनी ऑलरेडी उसमें सेटल हो गया है, मतलब ऑलरेडी प्रोडक्शन हुआ है, वो निकाल के बाद में एक केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं हनी के अंदर भी जाके अक्यूमुलेट होने के लिए चांसेस है, और उसके वजह से आपका हनी टॉक्सिक बन सकता है। सो इट इज बेटर टू extract honey and then you spray these chemicals. Okay. Next. ये तो नॉन इंसेक्ट पेस्ट है। मैं जो बोला अभी कंपेयर टू क्या है, वास्प और एंट्स और माइट्स, ये तीनों थोड़ा हमको ज़्यादा परेशान देते हैं, और ये वाला जो नॉन इंसेक्ट पेस्ट है उतना परेशान नहीं देते हैं। कॉमन क्रो तो है, मगर हम इजीली हटा सकते हैं इनको, और उतना परेशान ये तीनों क्या वास्प और माइट्स और एंट्स करते हैं उतना नहीं करते हैं। सो ड्रैंगो और ग्रीन बी ईटर और बेर का चांसेस बहुत बहुत कम है, क्योंकि हम डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, बी हाइव रख रहे हैं। बेर का चांसेस बहुत ज़्यादा वाइल्ड में होता है, जिधर हम कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगर किसी स्टेट में फॉरेस्ट में भी रखने के लिए अलो करता है बी बॉक्सेस को, तो उस तरफ का परिस्थिति में बेर का भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर ऐसा कर रहा है तो। नहीं तो इन चारों का उतना ज़्यादा क्या तकलीफ नहीं है, हम इजीली मैनेज कर सकते हैं।
आप कुछ पूछना चाहिए तो पूछ लीजिए। Anyone wants to share anything, or if you have any doubt, we can have discussion on that. नो थैंक्स सर। Okay, thank you. Thank you, sir. Students, if you have any doubts, you can just interact with sir now. Sir is there. Yeah. आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछिए प्लीज। नो मैम, अभी तो नहीं पूछना है। ठीक है। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारी क्लास चल रही है तो बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए था। वो बेसिक से वो पहले का वही था, बेसिक वन। दिस द सेकंड पेपर। सर का पेपर सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर मॉर्निंग किया ना सर, वो बेसिक है। टुमारो सर सेशन इज देयर अगेन। या ओके। मैं आज ज़्यादा नहीं बोला कि क्योंकि मेरे को भी समझ में आना है कि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन कैपेसिटी कैसे है और कैसे इंटरेक्ट होना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं बहुत कम टॉपिक लिया आज। तो कल से हम डिटेल इंटरेक्शन करेंगे। जी एनी अदर क्वेश्चंस? नो मैम। Okay, sir. We can conclude, sir. Yes, Tomorrow ma'am. we'll continue with sir's session. Sure. Again, same time, sir's class is there tomorrow. And the other session, the first paper, and that session is also there. All of you, please join. Sir, thank you very much, sir. Sujay, sir. Thank you, ma'am. Thank Yes, sir. you. Thank you, sir. See you tomorrow. Bye. Yes, sir. Thank you. Yeah, you can leave, students. मैम नेक्स्ट डे जब भी जो भी लेक्चर हो सर मैम हिंदी में उसे करवाना। वो तो साउथ इंडियंस है ना, हमारा एकेडमिक काउंसलर्स थोड़ा ज्यादा हिंदी नहीं बोलते हैं। हाँ, मैम वो तो एकेडमिक काउंसलर्स इंग्लिश और कन्नड़ में पढ़ाते हैं इधर। कर्नाटक है ना, वो तो ये सर को तो हिंदी मालूम था, वो पढ़ा लिया। वो दीपक सर को भी बोलते हैं, बट आपको तो स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा इफ अवेलेबल इन हिंदी, नहीं तो माई सेल्फ। ठीक है। I request another academic counselor also.